Hello students, today our topic is past perfect tense. In this video, we are covering explanation, example, structure with Urdu explanation. This topic is taken from your class metric book, English syntax board book, and the unit is King Bruce. Past perfect tense. The use of past perfect tense to show an action happened before another action. Both actions are done in the past and with the help of past perfect tense, we can understand which action happened first. Example, she had already left. वो पहले जा चुकी थी. When I arrived. जब मैं पहुंचा. तो the first action she had already left. वो पहले जा चुकी थी. When I arrived. जब मैं पहुंचा. दोनों एक्शन जो है वो पास्ट में हुए हैं, लेकिन when she had already left, ये एक्शन पहले हुआ, and the second action is I arrived. She had already left. One action. This action is also in the past. I arrived. This is a second action. This is also in the past. दोनों action past में हुए. But she had already left. This is the first action happened. Then I arrived. एक एक्शन होने से पहले, एक काम होने से पहले एक काम खत्म हो चुका था. This is called past perfect tense. She had already left. ये काम पहले हो चुका था. Finished action I arrived. जब मैं पहुंचा वो उससे पहले जा चुकी थी. So both action are in the past, but the first action is finished, complete action. दोनों काम past में हुए, लेकिन पहला वाला काम हो चुका था. So the past perfect tense हमें बताता है कि एक काम शुरू होने से पहले पास्ट में एक काम पहले हो चुका था. माजी में एक काम जब हुआ उससे पहले फर्स्ट एक्शन कंप्लीट हो चुका. फर्स्ट एक्शन इन पास्ट परफेक्ट टेंस, जो फिनिश्ड एक्शन है, जो फिनिश्ड काम है, वो पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है. एंड द सेकंड एक्शन इन पास्ट. फॉर एग्जांपल, दे हैड फिनिश्ड देयर डिनर. वो अपना डिनर खा चुके थे, कंप्लीट कर चुके थे, फिनिश कर चुके थे बिफोर द मूवी स्टार्टेड. मूवी स्टार्ट होने से पहले वो अपना काम, जब मूवी स्टार्ट होने से पहले वो अपना डिनर खा चुके थे. By the time the police arrived, जब पुलिस आई थी, the thief had escaped. उससे पहले चोर भाग चुका था. चोर पहले भाग चुका था, उसके बाद पुलिस आई थी. Two actions, both in the past, but the first action is already done. और जो done action होगा, finished, complete action होगा, वो past perfect tense होगा. The train had left. ट्रेन पहले जा चुकी थी. When I arrived at the station. जब मैं स्टेशन पहुंचा था, उससे पहले ट्रेन जा चुकी थी. She had finished her work. वो पहले काम खत्म कर चुकी थी. Before she went out. जब वो बाहर गई थी, उससे पहले वो अपना काम खत्म कर चुकी थी. We had already eaten dinner. हम अपना खाना खा चुके थे. When they called. जब उन्होंने हमें बुलाया था, उससे पहले हम अपना खाना खा चुके थे. They had already left by the time. वो पहले जा चुके थे. We arrived. जब हम पहुंचे थे, उससे पहले वो जा चुके थे. So the first action is complete. It is finished action. For my mom picked me up. जब मेरी मम्मा मुझे बुलाने आई, लेने आई. I had played 3 games of tennis. जब मेरी मम्मा मुझे बुलाने आई थी, उससे पहले मैं टेनिस की तीन गेम्स खेल चुका था. And the bell rang. जब बेल बजी, the students had finished their presentation. जब बेल बजी थी, उससे पहले बच्चे अपनी प्रेजेंटेशन खत्म कर चुके थे. By the time Loretta's husband got home, Loretta's husband जब घर आया था, उससे पहले she had given her baby a bath. उससे पहले वो अपने बेबी को नहला चुकी थी. Now the structure. For affirmative sentences, we use subject had plus past participle object. I had finished my work before the deadline. मैं अपना काम डेडलाइन खत्म होने से पहले कर चुका था.
Negative subject plus had not, hadn't, past participle object. She had not eaten when I arrived. जब मैं पहुंचा उससे पहले उसने खाना नहीं खा चुकी थी. Interrogative sentences had plus subject plus participle object. Had they traveled to Europe before? Or WH questions. Now, if the question start with WH words, WH words कौन से होते हैं? What, where, when, how, which. अगर क्वेश्चन उससे स्टार्ट होता है तो WH words always come in the starting of the question. Where had they gone before they came here? जैनब ने किताब पढ़ ली थी जब अहमद आया. Zainab had read the book when Ahmad came. अहमद ने कमरा साफ कर लिया था जब मेहमान आए थे. Ahmad had cleaned the room when the guest arrived. Now these are the some of the past participles. Now let's do the exercise. This is taken from your book. We have to fill the blanks with the help of past perfect, and verbs we have to take in from this pink box. We had spent a lot of money on buying gifts, so we decided to stop. We had spent, हम खर्च कर चुके थे. As soon as Samina had swept the yard, there was a storm. जब समीना ने सफाई की थी तब तूफान आया था. The group had travel कर चुका था several miles and had covered a big part of their journey. The student had finished कर चुके थे their work and had left for home. She had died before they had reached.